All right, guys. In today's class, our focus is to just finish some questions from the exam kit. Yeah, that's the focus with which we will be uh, moving ahead with this session today is to finish some exam kit questions, right? We finished the topic in the last class. In this class, what we are going to do is doing some exam kit questions, right? Because the exam kit question that really puts our concept testing, and we understand what really we have understood, what we have not understood. Okay, so let's get started here. And let's look into the first question here. Okay, looking into the first question and getting a good understanding on this. The first question that says IAS 21, the effects of changes in foreign exchange rate, defines the term functional currency as. What is the definition of functional currency? Okay, as easy as this question gets, guys. Yeah, okay. So I think this is one of the easier question on the exam kits here. Right? You can get some type of questions like this also in the exam, and they mix it up. So definitely a very easy question, guys. It's a definition question. Okay. So let's look into this here. So first of all, here is the functional currency from our notes, guys. From our notes, we made functional currency notes, very precise notes here. So we have that. And on this topic only, we have this question, guys. 69th question is from this topic. So I'll just first simplify the question. The question basically is asking what is the definition of a functional currency? Yeah, super easy. Yeah, what is the definition of a functional currency? Okay. So what is it asking over here? What is the correct definition of functional currency? That's all it's really asking. Okay, and we have it right here. Functional currency is the currency of the primary economic environment in which an entity operates. Okay, so the currency of the primary economic environment in which an entity operates. So our answer D is the correct answer. Okay, we have it in our notes also. As it is, we have the same definition in our notes, guys. Okay, same definition in our notes. So here I will mark the question also that this particular question has come from here. Okay, so question 69 is from here. So when you revise, you'll know a question has come from here from the exam kit. Question 69 is right from here. Okay, so they're asking the definition of a functional currency, and we've got it spot on. The currency of the primary economic environment in which an entity operates. Super easy. On the notes, also, I have made a mark of this question 69 has come from this topic, and we have it as it is right here. Right, if you follow as it is, we have it here. Okay, so this is good whenever we see exact questions from our notes, right? We get a lot of confidence in our notes. Super happy about this. It's a direct question, and we've got a super clear clarity. Yeah. You clear with this here, Arpita? Now we got the logic here. Okay. All right. Let's go to the next question. Now, point question 70. Let's look into the next question here. What is in store for us? So what I'll do is first I'll simplify the question for you, and then we'll look into the answer as well. Okay. Looking into question 70 now. What is question 70? So they are asking us what is the carrying amount of the land? Okay. All right. Quick question here. Any revisers in the house? Is land a monetary item or a non-monetary item? Non-monetary item. That's really good. Okay. So I will just go back to that exact place, right, where we learned monetary and non-monetary in our notes first. That you feel confident, you feel relatable from where this topic is coming, right? And that really gives you confidence in your notes. Okay. So you see non-monetary items. Okay. So examples of non-monetary, we have inventory purchases, property, plant and equipment, and land comes under it. Easy. So land comes right under it. Yeah, okay. So this is where the question is based out of, right? So this is where you'd see how your notes are directly able to help you to solve your exam kit questions, right? These are proper FR exam kit questions. So let's break this down here. And first, let's simplify it understanding here. So they're asking us Sunshine Co's functional currency. So there's a company. Okay, let's break down the question here first. So there's a company. Okay, there is a company. There is a company. What is the name of the company? Sunshine. Okay, there's a company called Sunshine with a reporting date of 31st December. Okay, there's a company called Sunshine. Sunshine is an entity with a reporting date of 31st December 2001. Okay, what is the reporting date of 31st December 2001? This is the reporting date. Okay, super. That is the year end.
So name of the company Sunshine. Reporting date 31st December. And if you see the question is also as at 31st December. So it's the same 1 year question. Okay. And a functional currency of dollars. Next bit of information. What is the functional currency of this company? Dollars. Easy. What is the functional currency of this company? Dollars. What is the functional currency of this company? Dollars. What is the functional currency of this company? Dollars. Easy. Okay. We're following well. We're following well up until now. Easy. Okay. Now on 30th June 2001. Okay. So ideally, if the year is ending on 31st December, when do you think the year started here, Nandika? 1st January. Absolutely right. 1st January, the year would have started. Okay. So now they are telling on 30th June. This is 6 months already into the year. Okay. Now they are building the question. They are telling us on 30th June 2001. Okay. On 30th June 2001, what happened? Let's see. It purchased land from an overseas at a cost of 30 million dinars. It purchased. Okay. So I think we'll just do some journal entries around here. Okay. Let's do some journal entries around here. Okay, so first of all, we have two parties. So one is Sunshine, that is the first party. Second is the overseas supplier. Easy. Two parties in the question, no doubt about it. There are two parties in the question. And Sunshine has purchased. So Sunshine is the buyer. So we will write it's a non-current asset. So land account. Okay, or we'll just write non-current asset, debit. Okay, what will be the journal entry? Because he's purchased, as we have seen the rule, assets and expenses are debited. So he has purchased the land, so non-current asset account debited. Two. Yeah, Karan, what would be complete the journal entry, please? Okay, so he's basically just purchased the land here, buddy. So there's a land that has been purchased. Correct? Okay, if he's paid cash, so we will do two cash. Okay, and if he's not paid in cash, then what do we do, Karan? Payables? Yeah, perfect. Okay, but you got the clarity now. Totally clear on this. Yeah, if he's paid cash, to cash. If he's not paid cash, to payables. Easy. Okay, if he's paid cash, cash. If he's not paid, you'll see payables. We'll see how the question unfolds. Okay, that is about this. Okay, now exact opposite journal entry we'll make right away. So the supplier would have received what? Yeah. So let's finish this over here. Mukund, best guess. The supplier has sold the land. Let's assume a supplier has sold land. Okay. So what would the supplier record the land as? What would the journal entry will be in the books of supplier? Yeah. He's so what would have come in the supplier's account? Absolutely. Perfect. Cash would be debited. Okay. And if he's a real estate guy, if he sells this, so we would put in this case sales credit. Yeah. Easy. Okay. But if he's not paid cash, Mukund, if it's a credit sale, what would be a journal entry? What would be debited? Okay. In this case, can we say it will be receivables for this guy? Receivables will be debited, absolutely. And credit? Same thing. Sales. As it is. Okay. So if it's a cash sales also, we know the journal entry. If it's a credit sales also, we know the journal entry in both the books. Okay. So this is in both the books. Just keeping the ultimate clarity here, guys. So keeping our ultimate clarity. These are the two parties. Ultimate clarity. Okay. So the transaction happened. Let's put the date also. When did this happen? 30th June. Easy. 30th June. Okay. If it's a cash transaction, this will be the journal entry. If it's a credit transaction, this will be the journal entry. In both the books, we have completely got the clarity here. Okay. Moving step by step here.
Okay, moving step by step here, and let's get a good answer. What's really happening? Next, what they're saying, it purchased the land from an overseas at a cost of 30 million dinars. So he can record it at 30 million. Right? He can record it at 30 million dinars. So no problem for it. He can record it at 30 million. Yeah, okay. 30 million dinars. Right? He can record at 30 million dinars. The supplier can. No problem for the supplier. No problem for the supplier. The supplier easy can record at 30 million dinars. No problem for the supplier. Yeah, okay. In either ways, he can record at 30 million dinars. Yeah. Yeah. Easy. But Sunshine cannot record at 30 million dinars. Yeah. Why do you think so, Arpita? Why do you think Sunshine cannot record at 30 million dinars? Absolutely, because the functional currency of Sunshine is dollars. Okay, because the functional currency of Sunshine is dollars, so he cannot record a transaction in dinars. Because the functional currency of Sunshine is dollars, he cannot record it in dinars. Right? Because the functional currency is in dollars, he cannot record it in dinars. Simple. Because the functional currency is in dollars, he cannot record it in dinars. Right? So we'll have to just convert. So we have a very simple way of converting, guys. Three, four simple steps. Okay, so let's do that. Okay. So we have three, four very simple steps to convert it so that we can record it in the books of accounts of Sunshine as well. Okay. So let's look into the steps here. Okay. Six-step process. Very easy. First, what we'll do. Yeah. First step here. First, what we'll do. Yeah. Let's look into this. First, what do we do? Yeah, Nandika. First, what do we do? Best guess. Okay. Let's just write down the first. We'll write down the currencies. Easy. Yeah. Dollars and dinars. Easy. Yeah. We're following, Nandika. Yeah, okay. Second, we'll write down the exchange rates. Easy. We'll write. So what's the exchange rate, Nandika, on 30th June? Yeah. Yeah. 3.0 is what? Dinars or dollars? Very good. 3 is dinars. So we'll just write it under dinars. Super easy. Yeah, okay. Yeah. Karan, can you get hands on a calculator? Yeah, okay. So 3 will put under dinars. Okay. 3 will put under dinars. 1 will put under dollar. Easy. Yeah, nothing complicated here. Super easy. First, we have just written the two currencies. Then, what we've done, first, we've written the two currencies. Then, we've written the exchange rate. Yeah. So, $1 is 3 dinars. Okay. Next, we'll write the amount that needs to be converted. So we will just take the amount and put it in the third step. Okay. We'll just put it in the third step. Okay. Important question here. Yeah. Important question here. Yeah, Nandika. Is the amount under the price currency or the base currency? Yeah. Okay. Absolutely right. The amount is under the price currency. Okay, absolutely right. Yeah, so that is something important to note. Where is the amount under? It's under the price currency. Easy. Okay, so now here, Arpita, what do? We divide or multiply? Perfect. We have to just divide. Yeah. All right, Karan. 10 million is it? Perfect. That's it, guys. $10 million. That's your answer. We have converted it. So step one, write the two currencies. Step two, write the exchange rate. Step three, write the amount that needs to be converted. Step four, figure out divide or multiply. You have to just look where it is written, the currency. Easy. So all you have to do is just, in this case, divide. Okay, if you just follow this format, guys, it'll be super easy no matter how complicated the sum looks. Okay, so now let's finally get that amount and let's finish the journal entry. This is the journal entry here. Okay, so this is the journal entry on 30th June. Right? Even if it's a cash transaction, even if it's a credit transaction, this is the journal entry on 30th June, all good. Okay. Now, next question they ask us here.
Next question they ask us here is that this purchase on $30 million, I've made the clear cut journal entry. Or what will be the journal entry? We have made a clear cut journal entry here. So here if we see it was purchased for $30 million, I have made the journal entry of $30 million. Easy. Okay, we are good to go. The land is an item of property, plant, and equipment that is measured under the cost model. So we had seen that slight point, guys. If anyone remembers, we had seen this one point and we have made a note of it also. If it's under cost model, no problem. But if it's under revaluation model, there's a step. Okay, so let's just go there and I'll write exactly where the question is coming from. Okay, so see, we have written here, it does not, the gain does not goes to P&L if the non-monetary item is at revaluation model. Okay, if your non-monetary item is at revaluation model, but here our non-monetary item is at cost model. Okay, so question 70, the basis is from this point, right? So our notes have already mentioned this point, guys, right? Very important to understand, right? That when our non-monetary items is at cost model, so this is the exact topic from which this question has come. This is the exact topic from which this question has come. Yeah. So nothing to do here. No worries, no steps needed only. And there is no retranslation also. So at the year end, at the year end. Okay. So when the year end happens, they are asking about the year end. Also, they have told the fair value on 31st December is 32 million dinars. Would we consider this? Yeah. Karan, what do you think? Would we consider the fair value, buddy? Because it's the cost model. Absolutely right. So we would not consider the fair value at all. We don't need to consider that. There's extra information just to trick you. If you have not done your revision, you will fall for this. Yeah. All of us would fall for this. If we have not done our revision, we would have fallen for this. Yeah, okay. So we have to do nothing. We have to just let it be as it is. We have to do nothing. We have to just let it be as it is. So now what happens is at the year end. So when the year end happens, when the financial statements are prepared, 31st December 2001. So in the balance sheet, in the statement of financial position, SFP, we will record the non-current asset, that is land. Okay, that is land at $10 million. That's it. Sum done, finished. That's all. With clear logic, guys. With clear logic. This is our answer. Solved. Any question, guys? Any questions here? Step by step, everything done. Yeah. Nandika, are we clear on this? Okay. Yeah. Mukund, did we get this, buddy? Okay. So that is all about our question 70. Yeah. Karan, clear on this, buddy? Yeah. Hmm. Okay, absolutely. Yeah. You have the understanding right. But just to solidify that, so Karan, if they had asked for payables, if at all, okay, if just adding a big if the question was for payables, what would you do, buddy, at the year end? Would you retranslate payables? Yes. No, it's an outstanding. It's outstanding at the year end. What would you do for payables? Exchange rate 2? Very good. Yay. Where will that difference go? ठीक है, it's not about where will it go? Just where. ठीक है, लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, किधर जाएगा, कौन से अकाउंट में? P&L. Absolutely, यार. Very good, यार. I think I'm so happy with your clarity, यार. You can drop the call, यार, for today. You're good to go. Good job, यार. Very good. Absolutely right. That's the way.
Okay, so that is if it was for payables, it we would have retranslated it at the year end at the closing rate, and the difference would have gone to P&L. If it was at the if it the question was for payables, okay, so that is the logic here. Okay. Yes, yes, please. हाँ, हाँ. Hmm. Sure, I got it. Perfect. Yes. तो अगर if at all we were using the fair value model, okay, if revaluation model to be more precise, if they would have told us that we have to use the revaluation model, this is exactly we would have done. What we would have done, revaluate revalued assets, use the exchange rate on revaluation. So first we would have revalued it, right? What we would have done, first we would have revalued it. तो पहले 30 को 32 पे लेके आते. फर्स्ट व्हाट वी वुड हैव डन, 30 को 32 पे लाते और फिर 32 को पहले डॉलर में कन्वर्ट कर लेते. ठीक है, क्योंकि देखो दिनार्स में तो लिख नहीं सकते किताब में. हाँ, दिनार में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सनशाइन की फंक्शनल करेंसी है डॉलर. हाँ, कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए. कन्वर्ट करने के लिए जिस दिन का अमाउंट है उस दिन की रेट. दैट इज ट्रू, क्लोजिंग रेट, यस. ठीक है. फेयर वैल्यू अपना जाता. ओके. या कहाँ जाता, ओसीआई में जाता, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल ओसीआई भेजता है सब कुछ. बस. दैट्स इट. वो उस. करेक्ट, एक्सचेंज रेट 1:2, एब्सोल्युटली राइट. और जो गेन आता ओसीआई में जाता, पीएनएल से लेना देना ही नहीं है इसका कुछ. ओके. ओके, सो व्हाट यू वुड डू, the assets carrying amount reflects both the fair value and the exchange rate. तो अलग से फॉरेक्स गेन कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता. अलग से फॉरेक्स गेन कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता. assets carrying value would reflect both the fair value and the exchange rate. So there's nothing else to take to P&L. Point being. ओके, सीधा इट वुड हैव गॉन 32 एंड ओसीआई में जाता, कुछ भी पीएनएल में जाने का था ही नहीं. दैट्स ऑल, डन, फिनिश्ड. ओके, बट गुड यार, रियली हैप्पी अबाउट द क्लैरिटी दैट इज अबाउट दिस. यस. हम्म. 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 दैट इज अ परचेजेस नॉट पेबल्स. पेबल्स वुड स्टे एज इट इज. पेबल्स रिट्रांसलेट हो जाता क्लोजिंग रेट पे. ठीक है, सो जैसे. हाँ. हाँ, सॉरी, यू फिनिश फर्स्ट. हम्म. हाँ, देखो. तो देखो, 30th पे कुछ चेंज नहीं होगा. फर्स्ट चीज, 30th एज इट इज रहेगा. पहली चीज, 30th जून एज इट इज रहेगा, उधर कुछ भी टच नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है, पहली चीज. ओके, वी आर पॉजिटिव ऑन दैट, कैन वी एस्टैब्लिश दैट अर्पिता. 30th जून जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि उस दिन की रेट के हिसाब से हमने सही काम कर दिया. तो देयर इज नथिंग दैट वुड चेंज ऑन 30th जून, पहली चीज. ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट. एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल. 30th जून पे जितना अमाउंट था वही एक्सचेंज रेट ले ली और उतने पे रिकॉर्ड कर लिया, तो 30th जून इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, उस पर कुछ टच नहीं करते. अब आते हैं हम लोग 31st दिसंबर पे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग 31st दिसंबर पे. 31st दिसंबर पे आते हैं अभी हम लोग. 31st दिसंबर में अब हमको अपना बुक्स क्लोज करना था और हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना था. तो जब किताब बंद करते हैं तो करेक्ट अमाउंट लेना होता है. तो क्या होगा, पहली चीज, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं हम लोग, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते तो जब मैं अपनी किताब क्लोज करता 31st दिसंबर को, तो मैं लैंड 32 मिलियन पे क्लोज करता. फर्स्ट, कैन वी स्टैब्लिश दैट अबाउट द लैंड, बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल, एब्सोल्युटली राइट. और उतने पे मेरी किताब बंद हो जाती, सिंपल. ठीक है, पर 30 से 32 आया, 2 मिलियन कहीं तो दिखाना है मेरे को. लॉजिकली ऐसे तो हम लोग नहीं इंक्रीज कर सकते, कहीं तो दिखाना है हमको, उसी आई.
कुछ भी पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप, डन। या, डिड यू गेट द लॉजिक? हम्म। अगर सेटलमेंट हो गया तो ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। जब पेमेंट कर रहे हैं, जब सेटल कर रहे हैं। हाँ, जो डिफरेंस है वो जब हम लोग पे कर रहे हैं, मान लो, तो अगर मैंने 32 मिलियन का पे कर दिया, ठीक है, तो मेरा पेएबल 10 मिलियन, लेट मी जस्ट पुट इट एंड एक्सप्लेन। तो मान लो मैंने पेमेंट कर दी, मैंने पेएबल्स, अब रहा नहीं पेएबल्स क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरा पेएबल्स डेबिट हो जाएगा। पहली चीज ये तो इसी अमाउंट पे डेबिट होगा। ठीक है, तो पेमेंट इतने पे हो गया। अब मैंने पैसे दिए, ठीक है, आई हैव पेड। तो मेरे बैंक से कितने पैसे निकले, लिटरली कितने का मैसेज आएगा मेरे को कि आपके एचडीएफसी बैंक से इतना क्रेडिट हुआ है। कितना क्रेडिट हुआ है? तो मैंने पे किया है उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ठीक है, तो पेबल्स मेरा उस दिन का एक्सचेंज रेट, तो पहले तो रीट्रांसलेट करूंगा पेबल्स को मैं। तो दो के एक्सचेंज रेट से मैं रीट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, तो जब मैं एक्सचेंज रेट रीट्रांसलेट करूंगा, यहाँ पे दो डाल के, ठीक है, तो दो डिवाइड करूंगा, 15 मिलियन मेरे बैंक से निकला। ठीक है, तो मेरे बैंक से कितने पैसे निकले? 15 निकले। ठीक है, 10 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी, 15 मिलियन मेरे बैंक से निकले। या अभी पॉजिटिव अबाउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, यार अर्पिता, अभी क्लियर विद दिस? बैंक से कितना निकला मेरे? 15 मिलियन। पेबल्स कितने का था? 10 मिलियन। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, ज्यादा पे किया कम पे किया हमने? ज्यादा पे किया, तो हमारे लॉस है गेन है? लॉस। डेबिट फॉरेक्स लॉस। ठीक है, और यहाँ जाएगा 5 मिलियन। दैट्स इट। तो पेबल्स की ये कहानी होगी अगर सेटल्ड हो जाता तो। दैट्स इट। नहीं, वो लैंड में डालेंगे, एकदम आएगा। ठीक है, अब उस पे भी आ जाता हूँ मैं। अब आते हैं लैंड की कहानी पे। अब मैंने बैलेंस शीट पे अपना लैंड दिखाना है, सो आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द लैंड। सो मैं सेम, एईडी, असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो अगर मेरे को डिफॉल्ट डेबिट को एक डिफॉल्ट डेबिट को और बढ़ाना है, तो उसको भी मैं डेबिट ही कर दूंगा। उसको भी मैं डेबिट ही कर दूंगा। ठीक है, क्रेडिट ओसीआई 5 मिलियन। दैट्स इट। ये हो गई लैंड की एंट्री। ये, हाँ ठीक है, जितना भी चेंज हुआ हो, इट्स नॉट दिस, जितनी, जस्ट टेल मी द एग्जैक्ट अमाउंट एक बार, करण जस्ट कैलकुलेट कितना होगा डॉलर्स में। ठीक है, तो या वाइल इज कैलकुलेटिंग, इज द जर्नल एंट्री क्लियर अर्पिता? लॉजिक सही आया? ओके, नाउ अब अमाउंट कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो करते हैं एक बार। अब मेरा असेट की वैल्यू है, ठीक है, अब मेरे को अपने असेट की वैल्यू 2 मिलियन से बढ़ानी है। ठीक है, असेट की वैल्यू मेरे को 2 मिलियन से बढ़ानी है। ठीक है, तो सेम इसी इसी मॉडल में मैं वो भी फिट कर देता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अपना। ठीक है, इसी मॉडल में वो भी फिट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मेरे को अपनी असेट की वैल्यू 2 मिलियन से बढ़ानी है किताब में। तो एक्सचेंज रेट है 2। फर्स्ट आई विल कीप द करेंसी एज इट इज, देन आई विल जस्ट चेंज द एक्सचेंज रेट टू द क्लोजिंग रेट ऑफ 2। देन आई वुड टेक द amount that I want to convert. I want to convert 2 million dinars into dollars. Okay, so it's under the price currency, so I would divide. And when I divide, I get a million. तो 1 मिलियन से I have increased the amount. Yeah, we good with this, Arpita? Is it clear?
ठीक है, तो ये हुई लैंड की कहानी, ऊपर रहा पेबल्स की कहानी। यार, हाँ बट rare yeah to get a journal question because when the calculations are complex they rarely go into journals, but yes if they do MCQ में आएगा ये तो you have to just select the right option, अगर journal भी आया तो you have to just select the right option। ये वाले क्वेश्चन जनरली सेक्शन सी में नहीं आएंगे, ये सिर्फ सेक्शन ए बी में एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें इतना डिटेल नहीं रहेगा, वो बस मैंने समझाने के लिए इतना डाला है। पर यू विल जस्ट हैव अ क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू जस्ट गेट द अमाउंट एंड जस्ट पुट इट। तो जर्नल इज रेयर, आता है बट वेरी रेयर, और इस टॉपिक में आई गेस नहीं आएगा, बट अगर आया तो यू नो द जर्नल एंट्री, बट आई एम कॉन्फिडेंट यू नो इट। ठीक है, तो ये रही पेबल्स की कहानी, ये हुई लैंड की कहानी। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस। नाउ लेट्स गो ऑन। Coming into the next one, in relation to IAS 21, in relation to IAS 21, the effects of change in foreign exchange rate, which of the following is true? Okay, so let's look into which of the following is true. Okay, with right logic, which of the following is true? Okay, so let's look into this, that which of the following is true. Okay, in relation to IS, firstly, exchange gains and losses arising on retranslation of monetary items are recognized in OCI. No, no, we have studied this also. Let me go to the exact amount there. जब retranslation होता है, ठीक है, retranslation creates an exchange and loss that goes to P&L, right? So I'll just write it exactly here. So when you revise that, you know a question came from here, right? That's where our notes are so clear that it's giving us the exact point of the answer. You know, it's giving us the exact point of the answer. The retranslation creates exchange losses recognized in P&L. So that is why the first one is wrong. ये OCI नहीं आता है, OCI नहीं आएगा। ओके, OCI आने की बात ही नहीं है। Second, non-monetary items measured at historical cost in a foreign currency are retranslated, are not retranslated, absolutely are not. ये question में we have not retranslated it, right? So this has come from here. Question 71. Exactly, it's come from here. Yeah, there's no retranslation, right? Our notes are giving a clear-cut example. There is no retranslation. Yeah. Second, last one. The first is clear, second is clear. Any questions on the first two? Yeah, Mukund, are we positive? First two? Hmm. Exactly. That's why it's wrong. That's why the first one is wrong. Okay, great. Now, last one. Intangible asset is a non-monetary item. So we have all the non-monetary items listed here. Okay. We have all the non-monetary items listed here. ओके, इन्वेंट्री परचेजेस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी लिस्ट विल मेक आर नोट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, व्हाट विल डू इज वी विल मेक आर नोट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें वी विल ऐड दिस। ठीक है, आर नॉन मॉनेटरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनटेंजिबल असेट्स। Intangible assets are non-monetary. Intangible assets are non-monetary. Yeah, we've just made sure our notes are giving a very good example, a very good clarity about everything. So question 70. So even if a question comes on non-monetary, because you would have revised these notes on a regular basis, we're just sharpening our notes. Every question should add something to our notes, because at the end, last week, guys, your note C is going to be the most important thing that you would revise, right? There's like 2 days, 3 days to the paper. These notes are the ones that are really going to be very useful, right? Intangible assets are non-monetary. Inventory, purchases, property, plant, and equipment, and intangible assets are non-monetary items. That's it. 2 and 3 are right. Yeah, okay. 71 is done. Okay. Nandika, positive on this? Clear about all the questions? 1, 2, 3? Okay. Very good. Let's move on. Okay. Let's look into 72.
Okay, let's look into 72 now. What about 72? Okay, let's get a good solid breakdown of this. We are just making sure we are at par with everything. It's the way the examiner wants. Okay, let's look into 72. What about 72 here? So an entity took a bank loan. Okay, the entity took a bank loan. Most important thing, the entity took a bank loan. Okay, what has the entity done? The entity has taken a bank loan. Okay, let's see if we even need a calculation here. So first of all, they're asking a company or an entity took 12 million dinars on 1st Jan. So on 1st Jan, they have taken a loan. Okay, ठीक है चलो एंटिटी कर देते हैं और एक यहाँ बैंक कर देते हैं ओके सो एंटिटी हैज टेकन अ लोन ओके एंटिटी हैज टेकन अ लोन कितने का है 12 मिलियन ओके 12 मिलियन दिनार्स द एंटिटी हैज टेकन अ लोन ऑफ 12 मिलियन दिनार्स ओके फर्स्ट Jan when has he taken it on Jan 1st easy Jan 1st okay so this part is done made a note of it okay made a note of this okay it repaid 3 million dinars on to the bank on 30th November. It repaid 3 million dinars. What it is done is that it's repaid 3 million dinars. Okay. So what is left? Okay. It is paid 3 million dinars. Okay. So यहाँ दोनों के बुक्स में लिख लेते हैं यहाँ पे एंटिटी का दिया हुआ है कि क्या है फंक्शनल करेंसी द एंटिटी ऑन रिपोर्टिंग हैज अ फंक्शनल करेंसी ऑफ डॉलर्स परफेक्ट सो एंटिटी कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन दिनार्स ओके एंटिटी का जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर्स है एंटिटी का जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर्स है सो लेट्स फिगर आउट कि एंटिटी कितने पे रिकॉर्ड करेगा जैन 1 का लोन ओके सेम मॉडल गाइस सिर्फ सेम ये यूज करना है 5 स्टेप राइट सेम 5 स्टेप एंड विल गेट आवर आंसर तो पहले तो देखते हैं कि जर्नल एंट्री जब करेंगे आई मीन जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो कितना सो फर्स्ट विल राइट डाउन द टू करेंसी डॉलर्स एंड दिनार्स हियर एज वेल 1st January दे सेइंग 1:6 डॉलर 1 है तो दिनार 6 चल रहा है इजी First, we wrote down the two currencies. Step one, write down the currency. We have written the currency. Step one, write down the currency. We have written the currency. Step two, write down the exchange rate. We have written the exchange rate. Step two, write down the exchange rate. We have written the exchange rate. Step three, step three, write the amount of the loan. 12 million dinars. So let's just write down 12 million here. 30 million की जगह 12 million लिख देंगे बस. 12 million dinars here. Easy. ठीक है. All good. Now ओके प्राइस करेंसी के नीचे है तो यहाँ भी डिवाइड होगा ठीक है और डिवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड है $2 million ओके $2 million ओके $2 million होगा ओके स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे हमारा जो बैंक लोन हमारे बुक्स में रहेगा ओके ठीक है बैंक लोन रहेगा ओके बैंक लोन रहेगा ओके वो रहेगा $2 million राइट $2 million ठीक है दैट विल बी एट $2 million ओके बैंक में पैसे आए लेट्स डू द जर्नल एंट्री बैंक लोन तो बैंक में पैसे आए राइट बैंक डेबिट बैंक लोन पेएबल क्रेडिट या बैंक लोन ही लिख दो ओके बैंक लोन पेएबल क्रेडिट 2 million yeah this will be the journal entry in the entity yeah this will be the journal entry in the entity okay this is the journal entry okay and अगर बैंक के बुक्स में भी लिख देता हूँ ये मैं let me just move this a little ठीक है बैंक के बुक में भी लिख देता हूँ मैं Jan 1 पे क्या चल रहा है ठीक है बैंक ने क्या किया इनका एक लोन रिसीवेबल है बैंक लोन रिसीवेबल है और बैंक से पैसे गए हैं बैंक के भी बैंक अकाउंट से पैसे ही गए हैं राइट सो 2 million दोनों की जर्नल एंट्री लिख दी ये तो दिनार में लिखेंगे तो इनको 2 million नहीं लिखना है इनको 12 million दिनार लिखना है ठीक है इनको 12 million दिनार लिखना है इनको 12 million दिनार लिखना है इजी या इसको $2 million लिखना है इनको 12 million दिनार लिखना है दैट्स द जर्नल एंट्री इन बोथ द बुक्स या दैट इज द जर्नल एंट्री इन बोथ द बुक्स
Yeah, that is a journal entry in both the books. ओके, तो दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री हो गई अपनी। ओके, एक $2 million लिखेगा, दूसरा दिनार लिख देगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि 3 million इन्होंने पे कर दिया 30th नवंबर को। 30th नवंबर को 3 million इन्होंने पे कर दिया। ओके, 30th नवंबर को इन्होंने पे कर दिया। ओके, 30th नवंबर को इन्होंने 3 million पे कर दिया। ठीक है, तो कितना पे किया इन्होंने? 3 million dinars. Okay, so 3 million dinars has been paid. Okay, so let's write down the journal entry of the 3 million dinars that are paid. Okay, so let's again same model, guys, same model. We will translate this again. ठीक है, इसी पे कर लेंगे। 3 million dinars नवंबर को पे किया, तब एक्सचेंज रेट 5 की थी। कितना पे किया? 3 million पे कर दिया। 3 million पे कर दिया 5 से। ठीक है, 600,000 क्या? एक बार जस्ट डू दिस करण, कितना आ रहा है? 6 lakhs, 600,000। Okay, perfect. Just good to be sure. You want to make 1 0 extra here and there. तो $600। ठीक है, $600 की पेमेंट हो गई है। ठीक है, $600, तो इसकी भी जर्नल एंट्री डाल देते हैं। तो 30th नवंबर को 600,000 की पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले तो बैंक से पैसे गए हमारे। इजीएस्ट जर्नल एंट्री एवर इज बैंक से पैसे गए। ठीक है, बैंक से पैसे गए $6 लाख, $600,000 इतने पैसे गए बैंक से। ठीक है, पर गेस व्हाट, हमारा पेएबल भी तो कम हुआ। यू विल डेबिट द पेएबल नो, हमारा पेएबल भी तो कम हो गया। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इतना डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेरे पास 2 मिनट है एक क्वेश्चन, 1.8 मिनट से एक क्वेश्चन के लिए मैं बस समझाने के लिए इतने डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप एकदम कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी को इसी से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये हो गए 30th नवंबर की जर्नल एंट्री। या लेट्स मेक सेंस ऑफ द जर्नल एंट्री हियर। या अर्पिता, लेट्स मेक सेंस, क्या चल रहा है यहाँ? हम्म। हम्म। परफेक्ट। ठीक है। Yeah, Nandika, are we following? Is it clear till here? What's happening here on 1st Jan and 30th November? Okay. Just curious, Nandika, do you understand Hindi? Okay. I suddenly realized. Okay, done. So that's 600,000. Okay, let's go now. Now what they're asking is, what the question is here is, what is the total loss on the above transactions on the year end 31st December? Total loss on the transaction. ओके, व्हाट इज आर टोटल लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन? ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पूरे ट्रांजैक्शन पे क्या लॉस हो गया है, व्हाट इज द टोटल लॉस ऑन आर ट्रांजैक्शन? ठीक है, टोटल लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन। तो चलो देखते हैं टोटल लॉस क्या है ट्रांजैक्शन पे। तो हमारा ट्रांजैक्शन अभी इन माय बुक्स, कैन आई से माय बैंक लोन पेएबल आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन इज एट 14 million? आई वुड से माय बैंक लोन पेएबल, अब जो पेएबल है मेरे बुक्स में, बैंक लोन पेएबल जो है मेरे बुक्स में, ओके, जो बैंक लोन पेएबल है मेरे बुक्स में, ओके, वो कितने का होगा अभी? या करण, कितने का होगा बैंक लोन पेएबल मेरे बुक्स में? कितना बचा होगा? हाँ? ये क्या था? ये 2 million था ना बड़ी, तो 1.4 million बोल लूं, है ना? 14 लाख होगा अपना। ठीक है, तो ये होगा परफेक्ट। ठीक है, ये अपना। ठीक है, अब मेरे को बताओ। या सो नाउ, so Mukund, do you think this will be retranslated? Will the payable be retranslated at the year end? It's a monetary or a non-monetary item? Payable. It's a monetary item. Absolutely right. Yeah. So we will retranslate it. That's it. We will retranslate it. Okay. We will retranslate it. So let's retranslate it. Okay. So let's same model once again, guys. If you see, बस रेट बदल गई है इधर और अमाउंट बदल गया अभी। 5.6 और
कितना था मेरा? 1.4 मिलियन था क्या? मैं क्यों कर रहा हूँ ये? तो 14 तो डॉलर्स में ही है, तो 14 मिलियन तो ट्रांसलेट भी नहीं करने की। तो अपने को 1.4 मिलियन है डॉलर्स में। ठीक है, 1.4 मिलियन है डॉलर्स में। अब मेरे को निकालना है, अब मेरे को निकालना है कि रीट्रांसलेट करने के बाद, ठीक है, रीट्रांसलेट करने के पे, अगर मैं रीट्रांसलेट करूं, ठीक है, अगर मैं रीट्रांसलेट करूं तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो 9 मिलियन दिनार अभी तक लोन बचा हुआ है, राइट? 9 मिलियन दिनार का लोन बचा हुआ है अभी तक। 12 मिलियन का लोन था, 12 मिलियन का लोन था, 3 रीपे कर दिया, तो 9 मिलियन दिनार बचा हुआ है 5.6 की रेट पे। सो व्हाट इज द अमाउंट हियर करण? 9 मिलियन डिवाइड बाय 5.6 कितना है? हाँ, 16। ठीक है, 1.6 ले लेते हैं बस। 1.6 मिलियन। ठीक है, 1.6 मिलियन। ठीक है, 1.6। ठीक है, तो अगर हम 1.6 अब इससे हटा दें तो वो डॉलर्स में कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है, अब जो मेरे पेबल की वैल्यू वो ये है। ठीक है, जो मेरे पेबल की वैल्यू है वो है ये। तो 2 मिलियन का मेरा लॉस है। ओके, 2 मिलियन का मेरे को लॉस रिकॉर्ड करूंगा मैं पीएनएल में। पीएनएल में 2 मिलियन का, सॉरी 2 मिलियन का, एक जीरो और लगेगा। 2 मिलियन का मैं लॉस रिकॉर्ड कर लूंगा, काम खत्म। राइट, यहाँ पे हम देखें 207, दैट इज बस राउंड ऑफ का। अपन करो सही, इसी पे आए हम लोग भी, यही किया हमने भी। 9 मिलियन 5.6 पे डिवाइड किया, यहाँ पे देख लो। 9 मिलियन हमने भी 5.6 पे डिवाइड किया, तो 1607 आया। बस 1607 को आप 14 से निकाल दो तो आपको 207 आ जाएगा। ये रहेगा टोटल लॉस, फॉरेक्स लॉस रहेगा ये। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री भी दिखा देता हूँ। मेरा पेबल्स बढ़ गया अभी। ठीक है, पेबल्स बढ़ गया, तो डेबिट द माई फॉरेक्स लॉस, डेबिट माई फॉरेक्स लॉस, डेबिट माई फॉरेक्स लॉस, क्रेडिट माई पेबल्स, काम खत्म। ठीक है, या राइट, एंड दिस वाज द क्वेश्चन, ये फॉरेक्स लॉस पीएनएल में कितना आ जाएगा? हम्म, 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 डन डन, एक जीरो एक्स्ट्रा, परफेक्ट। ठीक है, दैट इज अबाउट अ फॉरेक्स लॉस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो भी, यहाँ पे अगर आप देखो भी, यहाँ पे तो ओनली डिफरेंस इज इन द कैलकुलेशन खाली। ये जो 207 भी आ रहा है, हमने 9000 बाई 5.6 लिया, 9000 बाई 5.6 लिया, 1607, बस उतना सा फर्क है, नो वरीज। ठीक है, इसलिए ऑलवेज यूज द कैलकुलेशन जब अपन कर रहे हैं, कि ट्राई टू यूज के यहाँ का ही जो फंक्शंस है ना, दैट इज बेटर टू यूज। क्योंकि आपका थोड़ा भी ऑफ रहा नंबर, तो आपका वो वर्किंग देख के दे कैन स्टिल गिव यू मार्क्स। पर अगर हम बाहर से कैलकुलेट करके करें, तो अगर थोड़ा भी ऑफ रहा, तब फिर वो रॉन्ग आंसर कहलाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं आपको कैसे आया है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज द एक्सेल फंक्शंस। ठीक है, अभी अपन ऐसे कर लिए, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज द एक्सेल फंक्शंस, क्योंकि इन्हीं, इसी दौरान, अभी देख लो यही, आपका आंसर उनके आंसर की से अलग रहेगा एग्जामिनर के। और अगर उनको पता भी नहीं है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सो हाउ कैन दे गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो राउंडिंग ऑफ एरर होगा? तो व्हाट वी हैव टू इंश्योर दैट वी ऑलवेज यूज द एक्सेल फंक्शंस हियर। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड वी लेट्स डू दैट, टू यूज द एक्सेल फंक्शंस हियर। ओके, लेट्स यूज द एक्सेल फंक्शंस हियर। Okay, let's use the Excel functions. To say they can justify your rounding of errors also. Okay, they can justify your rounding of errors. Okay, that's it. Done. Yeah. Now we clear here, Nandika? Did it make sense?
ओके, ऑलराइट। तो इस नेक्स्ट है अपना 73। क्या है यहाँ पे? अंडर द कॉस्ट मॉडल, अरे यार सेम किया अभी। ओके, सेम सम है गाइस, मशीन का कॉस्ट मॉडल। लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, लेट्स ऑल ट्राई दिस वन आउट यार। ठीक है, एक सम खुद से ट्राई करते हैं, ये सेम है एकदम, लिटरली सेम है जो हमने करा ऊपर। ठीक है, अगला वाला अब आई थिंक इन्वेंट्री के सम्स है फिर नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स टेक द 73। अपडेट करता हूँ मैं होमवर्क में, एक वाला ये खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, एक खुद ट्राई करते हैं, लेट्स सी। लेट्स ट्राई दिस वन आउट। ठीक है, इफ यू गेट अ प्रॉब्लम आई ऑब्वियसली हेल्प यू आउट टुमारो, बट लेट्स ट्राई दिस वन आउट। ठीक है, तो फर्स्ट वन के 73 हम सब सॉल्व करेंगे। Right, question 73 from exam kit, we'll all practice. It's literally the same that I've done, और evaluation model भी नहीं है, ये भी cost model ही है। Question 73 we will all practice। Okay, and update please, update it here please, practice and update the tracker। ठीक है, first thing। second, अभी revise all questions from 69 टू 73। सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार देखना है। किसी में भी थोड़ा भी डाउट लगा, ब्रिंग इट अप टुमारो, वे द कॉन्सेप्ट इज फ्रेश, आपको ही बेटर समझ में आएगा। सो प्लीज रिवाइज ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 69 टू 73 रियली वेल। लुक इनटू एवरी स्टेप एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, आई वुड रिकमेंड। राइट, कीप वन एक्सेल फाइल ऑफ योर प्रैक्टिस, और उसमें आप खुद से ट्राई करो हर एक स्टेप, तभी पता चलेगा। दिस इज टू इजी मार्क्स टू स्कोर यार। हाउ वेल ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। Right, so there's two easy marks to lose, so no losing marks on foreign exchange, yeah, please. Right, we cannot lose a foreign exchange mark. It's a sin to lose marks on foreign exchange. It's the easiest ever. Right, once if you just understand it in essence, you can just use it. It's impossible to go wrong here, unless obviously through calculation errors. ठीक है, तो रिवाइज ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 69 टू 73। ओके, एंड पोल स्टार हमने करा था। ठीक है, पोल स्टार किया था, और उसके पहले पार्टी को भी हो गया। ठीक है, अभी अपन रेशियो का एक क्वेश्चन देखेंगे, पर्ड को देखेंगे। ठीक है, एक पर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो विल जस्ट प्रैक्टिस पर्ड को। वॉच द वीडियो पर्ड को, यू नो वेयर टू वॉच इट फ्रॉम। ठीक है, वॉच इट फ्रॉम वाईटी। ठीक है, पर्ड को देखेंगे एक बार। ठीक है, पर्ड को अच्छे से देखेंगे एक बार। ओके, एंड एज अ होमवर्क, ठीक है, कल अपन चैप्टर 10 का है वाईटी पे, एक बार देख के आएंगे, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा चैप्टर। ठीक है, तो ये तो अपन देखेंगे। एंड जस्ट फॉर टुमारो गाइस, मंडे ट्यूसडे खाली, लेट्स कैच अप एट दिस टाइम ओनली। ठीक है, सिर्फ 2 days द वीक, बाकी सारे दिन वी विल कीप इट एट अ रेगुलर टाइम। जस्ट मंडे एंड ट्यूसडे, लेट्स जस्ट कीप इट एट दिस। ठीक है, बाकी अपने दिन वी विल कीप इट एट अ रेगुलर टाइम एट 12:30, एंड वी विल लुक एट चैप्टर 10। ठीक है, so again all you'll find the 3 and 4, you know where you'll find it. Chapter 2 we'll revise everything, and we'll look into revise all questions, and along with that revise the excel of chapter 9। ठीक है, we will revise the excel of chapter 9। अब भी एकदम fresh topic है, so revise it well once। guys, revise the excel of chapter 9। okay, so let's do this as a homework। We'll revise the excel of chapter 9, we'll revise all the questions from 69 to 73। question 73 we'll practice on our own। पर्ड को we'll watch it, chapter 10 we'll watch it once। ठीक है, पर्ड को देखेंगे, chapter 10 देखेंगे एक बार। ओके, this is what we are looking to do। okay, this is what we are looking to। ठीक है, that's a wrap on the exam kit questions।